उसके बाद दूसरी क्रिया इसके बाद जो करनी चाहिए वो दोनों हाथ से अलग अलग करेंगे और इसको चंद्रासन भी बोलते हैं। श्वास भरते हुए राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे, कंधे से पूरा ऊपर खींचे और लेफ्ट साइड एक बार ये बंद करके देखो। हॉटस्पॉट क्यों उसको करना इसी प्रकार से लेफ्ट हैंड को पूरा श्वास उठाएं, कंधे को पूरा ऊपर खींच दें और राइट साइड रुक जाए। ठीक है जी। हमने शरीर को खींचा और दाएं बाएं मोड़ा। अभी हम बॉडी को बैकवर्ड मूवमेंट की तरफ, तो पीठ पर हाथ रखेंगे और गर्दन को आराम से, गर्दन पे दबाव नहीं देंगे, गर्दन को ढीला रखेंगे, बिल्कुल पीछे की तरफ जाएंगे और जितना आराम से हो सके आराम से पीछे झुकेंगे। वापस बैकवर्ड मूवमेंट हो गया और एक फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मूवमेंट में जानता हूं कि सबके हाथ जमीन पे नहीं लगते हैं, तो उसके लिए आपको बिल्कुल जैसे आप फिजिकल एजुकेशन की टीचर हैं, जैसे हम श्वास को खाली करके सिर्फ सामने झुकने की क्रिया करते हैं, सिर्फ उतना ही मात्र कर लीजिए। पूरा श्वास भीतर भरिए, पूरा खींचिए, श्वास खाली करते हुए सामने झुकिए, झुकिए, जहां तक जा सके वहां रुक जाइए, एकदम आराम से रिलैक्स करिए। श्वास भरते हुए वापस आइए, पूरा शरीर ऊपर खींचिए और रिलैक्स। चार तरफ की क्रियाएं हुई। अब हम लास्ट जो खड़े रह के करने की है वो है ट्विस्ट की। तो ट्विस्टिंग की सामान्य क्रिया है, एकदम हाथ को ऐसे रखेंगे और पूरा एक तरफ, फिर दूसरी तरफ, ऐसे 5 से 7 बार आप रिपीट कर सकते हैं। इसमें होल्ड करने का बेनिफिट ज्यादा मिलेगा लगातार करने के लिए। आसन के लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं स्थिर सुखम आसन। स्थिर सुखम आसन का अर्थ हुआ कि जब भी कोई भी आसन की पोजीशन में हम आए तो स्थिरता हो और सुख मतलब कंफर्ट हो। स्थिरता का अर्थ होता है मस्कुलर स्ट्रेंथ, कि अगर आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो आप बिल्कुल स्थिर रहेंगे। और सुख का अर्थ है जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी, कि जिस भी मुद्रा में आप रहेंगे, जिस भी आसन में आप रहेंगे, तो उसमें आपको किसी भी प्रकार का खिंचाव नहीं होगा, उसी समय आपको सुख महसूस होगा। तो आसन जो है वो दोनों काम करता है, मसल्स की स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव करता है और इसके साथ साथ मसल्स की जो इलास्टिसिटी है, लॉन्गिट्यूडिटी है, जो स्ट्रेचेबिलिटी है, उसको बढ़ाने का भी काम करता है, जिसके कारण हमारे जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है। तो इसलिए जो भी हम आसन करें उसमें पूर्ण अवस्था में जाके और होल्ड करें। ठीक है, होल्ड करने का ही बेनिफिट जो है वो हमारे को सबसे अधिक मिलेगा। तो ये कुछ क्रियाएं। उसके बाद हम अगर थोड़ा और इसमें समय मिले तो थोड़ा सा पैरों को स्ट्रेच करने की क्रिया भी कर सकते हैं। त्रिकोण आसन की हम कहते हैं। दोनों पैरों में फासला बना लिया। ठीक है, सबसे पहले राइट साइड करेंगे तो राइट पैर के पंजे को स्ट्रेट कर लेंगे। ठीक है, सीधा सामने की तरफ कर लेंगे। इसी घुटने को मोड़ेंगे, राइट घुटने को मोड़ेंगे और हाथ को घुटने के सामने रखेंगे, दूसरे हाथ को पीछे सीधा। ठीक है,
इसी तरह से इसको चेंज कर लेंगे, पहले सीधा कर लेंगे, फिर जो लेफ्ट पैर है उसको टर्न कर लेंगे। ठीक है, पहले घुटने को मोड़ेंगे, हाथ को सामने रख लेंगे और फिर ठीक। वापस आ जाइए। इससे हमारे पैर भी खुल जाएंगे, हमारे हिप जॉइंट भी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। बैठकर आज सुबह आपने काफी सारी क्रियाएं सीखी थी। मॉर्निंग में जो सेशन था मैं यही उपस्थित था। उन क्रियाओं को आप रोज कर सकते हैं। बैठकर भी जब आप करें तो इस बात का ही ध्यान रखना है कि सारी क्रियाएं होनी चाहिए। स्ट्रेचिंग भी होनी चाहिए, सामने की तरफ बेंडिंग भी होनी चाहिए, पीछे की तरफ बेंडिंग, और साइड ट्विस्टिंग जो किया था ना सुबह, वक्रासन, घुटने को पकड़ के जब मोड़ा था, तो वो भी होना चाहिए। ठीक है, अब हम, क्योंकि आज का आपका शायद लास्ट सेशन ही होगा, तो अब हम लेट कर कुछ आसन और सीखें। तो दो तरफ से लेटकर होता है, पहले पीठ पर केवल लेटकर हम आसन सीखेंगे। लेटने का तरीका क्या है? हम अपने घुटनों पर हाथ रख के ही बैठा करेंगे, और जब भी लेटकर खड़े हो या लेटने जाएं तो करवट लेके लेट। ठीक है, घुटनों पर हाथ रख के बैठने की क्रियाएं करनी है हमेशा, ताकि कमर दर्द ना हो। साइड करवट लेके लेटना है हमेशा, और पीठ के बल। पैर उधर कर लीजिए, पैर उधर कर लीजिए, फेस इधर कीजिए, पैर उधर कीजिए। एक एक पैर को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे हम। पहले देख लीजिए, पहले देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, फिर करिएगा। लेट के बना जाओ, ऐसे ही लेटते हुए देखिए, देखते हुए आज ही। वेरी गुड। इधर मुंह कीजिए बेटा, इधर मुंह करिए, उधर पैर कीजिए। हाँ, अब देखिए सर क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट राउंड है। एक बार ये करेंगे, उसके बाद सेकंड में हम दोनों पैरों से करने की कोशिश करेंगे, और इस बार रुकेंगे, जैसे यहाँ रुके। ठीक, उसके बाद इसी के सेकंड राउंड में हम थोड़ा सा और ऊपर उठाएंगे, यहाँ रुके। हाँ, उसके बाद तीसरे में देखिए, और इसके बाद थर्ड स्टेप में पैर को मोड़ के करेंगे। ठीक, और नेक्स्ट स्टेप में दोनों पैरों से। चलिए लेट जाइए, अब टेबल लेट जाइए। वेरी गुड। जी, पहले एक एक पैर को पूरा ऊपर उठाएं जहां तक उठा सकते हैं। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे ले जाएं। दूसरे पैर को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले जाएं। हाँ, अब दोनों पैरों को एक साथ श्वास भरते हुए जमीन से सिर्फ 2 फीट ऊपर उठाएं। थोड़ा सा होल्ड करें। श्वास खाली करते हुए नीचे ले जाएं। अब श्वास भरते हुए 3 से 3.5 फीट ऊपर उठाएं। श्वास खाली करते हुए वापस नीचे।
अगली क्रिया पैर को मोड़ने की है। राइट पैर को मोड़े, घुटने के पास से हाथ से पकड़े, पूरा पैर सीने के साथ सटाएं, गर्दन को उठाकर नाक को घुटने से लगा दें। रिलैक्स। लेफ्ट पैर को उठाएं, घुटने से मोड़ें, हाथ से पकड़ें घुटने को, अच्छी तरह से सीने के साथ सटाएं। अब नाक को घुटने के पास लगा दें। रिलैक्स। अब इसी क्रिया को दोनों पैरों से एक साथ दोहराएंगे। दोनों घुटनों को मोड़ें, हाथ से पकड़े अच्छी तरह और नाक को दोनों घुटनों के मध्य स्थापित कर दें। रिलैक्स। ये जो हमने दो क्रियाएं की, जिनको कमर दर्द रहता है उनको जो पहली क्रिया थी वो एक एक पैर से ही हमेशा करनी है, दोनों पैरों से एक साथ नहीं करनी है। जिनको भी कमर दर्द है, कितना भी अधिक कमर दर्द हो, अगर आप एक एक पैर से रोज करते हैं तो 5 से 10 दिन के भीतर आपका कमर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोनों पैरों से कमर दर्द वालों को नहीं करनी है। अगर हम दोनों पैरों से करेंगे तो जितना हमें लाभ मिलता है एक एक पैर करने से, उतनी ही वापस हमें हानि हो जाती है। तो इसलिए एक एक पैर से करेंगे। दूसरी क्रिया जिसको पवन मुक्त आसन कहते हैं, उसको भी हमें एक एक पैर से ही करना है जिनको कमर दर्द है। कमर दर्द में सबसे लाभकारी दोनों आसन है। पहला है उत्तान पाद आसन और दूसरा है पवन मुक्त आसन। दो आसन हम ये कर ले और अब हम कमर को ऊपर उठाने का आसन करेंगे। सेतुबंद आसन बोलते हैं। सामान्य आसन है, आप ऐसे ही लेटे रहें, दोनों पैर को मोड़ लें, टखनों को हाथों से पकड़ लें। टखने जो है ना पैर के एंकल जॉइंट, उसको हाथ से पकड़ लें, पैर नीचे टिके रहेंगे जमीन पर। श्वास भरते हुए कोशिश करें पेट के भाग को ऊपर उठा दें, कंधे टिके रहेंगे, पैर टिके रहेंगे, बाकी के पूरे भाग को ऊपर उठा दें। सेतुबंद आसन। श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे आ जाएं। यह भी आसन कमर दर्द के व्यक्तियों के लिए ठीक रहता है। एक बार पुनः अभ्यास कर लें। रिलैक्स। ये 3 क्रियाएं आप लेटकर आसानी से रोज कर सकते हैं। अगली क्रिया के लिए आप पलटकर पेट के बल लेट जाएं। मकरासन सभी जानते होंगे। दोनों कोहनियों को रखें हाथों से इस प्रकार। इस आसन का जो बेनिफिट है वो यही है कि हम पूरे दिन जब तक जागृत अवस्था में रहते हैं तब तक हमारा जो अपर बैक है, जिसको सर्वाइकल पोर्शन कहते हैं, वो हमेशा नीचे की तरफ ही झुका हुआ रहता है, जिससे धीरे धीरे जो इन वर्टिब्राज में जो गैप है, जो इनके पैड्स हैं, इनके बीच में जो गैप होता है, वो धीरे धीरे इम्बैलेंस होने लग जाता है। किसी पार्ट में कम हो जाता है, किसी में बढ़ जाता है। तो उसके कारण सर्वाइकल प्रॉब्लम्स हमारे साथ आ जाती हैं। तो उन प्रॉब्लम्स के लिए सबसे अच्छा उपाय है, कम से कम रोज 10 से 15 मिनट तक हमें इस आसन का अभ्यास करना चाहिए। और सुदृढ़ बनाने के लिए पीछे से एक पैर को उठाकर मोड़ लें,
घुटने से मोड़कर अब वापस सीधा कर दें, फिर दूसरे पैर को मोड़ लें। ये क्रिया भी बार बार दोहराते रहे, एक एक पैर से, एक पैर एक से कर लिया फिर दूसरे पैर से, लगातार संचालित कर सकते हैं। तो इससे आपको और अधिक बेनिफिट मिलेगा। रिलैक्स। अब हम इसी मुद्रा में एक और आसन सीखेंगे जो है भुजंग आसन, कोबरा पोस्चर, जो सूर्य नमस्कार में भी हम करते हैं। लेकिन देखिएगा आप, भुजंग आसन एक ही है, हम 3 वेरिएशन से करेंगे। हाथों की पोजीशन सिर्फ हम चेंज करेंगे 3 बार, और आप देखेंगे कि आपको कमर पर अलग अलग स्थान पर दबाव महसूस होगा। सबसे पहले हाथ जो है वो कंधों के सामने रखिए, कंधों के आगे, और श्वास भरते हुए अपने हाथों को सीधा कर दीजिए, कमर को ऊपर उठाइए, नाभि तक के भाग को ऊपर उठाइए, चेहरा ऊपर की तरफ, दृष्टि आसमान की तरफ। कमर को ढीला छोड़िए, श्वास खाली करते हुए वापस आ जाए। यह फर्स्ट वेरिएशन था। दूसरे में आप कंधों के बराबर रखिए हाथों को, श्वास भरते हुए पूरा शरीर ऊपर उठाएं, नाभि तक का शरीर ऊपर, चेहरा आसमान की तरफ, कमर को ढीला छोड़ें, श्वास खाली करते हुए वापस। और इसी का थर्ड वेरिएशन है, आप सीने के पीछे की तरफ हाथ को ले जाएं, कंधों से ज्यादा पीछे ले जाएं, और अब जितना हो सके कोहनी को सीधा करना। अगर आपसे पूरा हो जाए तो पूरा, आधा हो तो आधा, पूरा ऊपर की तरफ ले जाएं। कमर को ढीला छोड़ दीजिए। जिनको प्रॉब्लम हो वापस आ जाए, रिलैक्स, वापस आ जाए। तो ये 3 वेरिएशन में भुजंगासन है। ये इनमें से आप चूज कर सकते हैं कि किस में आपका शरीर कंफर्टेबल फील करता है, और उसी को करने का प्रयास रोज करते रहें। इसी में एक आसन और आज हम कर लेंगे जिसको हम शलभासन बोलते हैं। ठीक है, शलभासन के लिए दोनों हाथों को थाइज के नीचे रख लीजिए। श्वास भरते हुए राइट लेग को ऊपर उठाए, आराम से जितना ऊपर उठा सकते हैं आप, सिर्फ सीधा रखते हुए, बिना घुटने से मोड़े। राइट लेग को पूरा ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आए। अब श्वास भरते हुए लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं, श्वास खाली करते हुए नीचे ले आए। यह भी आसन कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा एक साइटिका का जो पेन होता है, जो हमारे पैर में होता है, उसका अगर हम इसका 10 दिन भी अभ्यास कर लेंगे तो किसी भी प्रकार का साइटिका का पेन हो वो ठीक हो जाएगा, कितना भी पुराना हो जाए। एक बार फिर अभ्यास कर लीजिए। राइट लेग को ऊपर उठाइए, होल्ड करें, रिलैक्स। श्वास भरते हुए लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं, होल्ड करें, रिलैक्स। अब जिनको कमर दर्द नहीं है वो दोनों पैरों से एक बार अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं एक साथ, गुड। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। एक और अभ्यास कर लें। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। अभी बैठने का भी तरीका है। जब हम बैठने के लिए मुद्रा में जाएं, जब आप रोज भी सुबह उठें तो इसी का पालन करें, कभी कमर दर्द नहीं होगा। इसी पोजीशन में हमने जैसे भुजंगासन किया था ना, अभी
सीने को ऊपर उठाया था, उस आसन में जाएं, भुजंगासन की पोजीशन में जाएं और अब पैरों को मोड़ के वज्रासन में बैठ जाएं। इस आसन में अगर इस तरीके से अगर आप बैठने का कार्य करेंगे तो कभी कमर दर्द आपको नहीं होगा। तो आज का इस सत्र का जो छोटी छोटी क्रियाएं जो हम रोज कर सकते हैं, इनको आप अगर 3-3 4-4 बार रिपीट करते रहेंगे तो इतना ही बहुत है आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखने की दृष्टि से। Thank you, experts, for giving us time from your schedule and inspiring and motivating us to inculcate yoga in our daily routine. The word yoga is derived from the Sanskrit word yuj, meaning unite. The practice of yoga aims to create a union between body, mind, and spirit, as well as between the individual self and universal consciousness. The beauty of yoga is that it can be practiced by anyone. It doesn't matter how old a person is or what shape she is in. It is a perfect way to ensure overall health, physical fitness by bringing stability to the body and the wavering mind. In India, the practice of yoga started centuries ago. In the present times as well, it is followed by many due to its multiple benefits for health as well as its ability to improve the overall quality of life. Moving on, I would like to introduce you to our chief guest for this session, Dr. Ishwar V. Barsava Reddy, Director, Morarji Desai National Institute of Yoga. He is also the head of the Institution of Yoga, Ministry of Ayush, Government of India since 2018. He was the head of the Center WHO CC for Traditional Medicine Yoga and has also served as advisor Ministry of Ayush. I further request you, sir, to kindly address the participants of this Shivir. Over to you, sir. Om Shanti Shanti Shanti. Honorable Director of the Institute, Professor Reddy sir, eminent academicians and faculty members, my dear yoga participants, brothers and sisters, my pranams to you all. At the outset, I congratulate the director for organizing a very important Yoga Shivir for the health and well-being of the students, faculty, and administrative staff. I do know that Professor Reddy ji always promote many activities related to health and well-being of the faculty and the students. Since I know him from as a student dean of the IP University. It's my proud privilege to be part of this Yoga Shivir and share few thoughts on how yoga helps us to live well. First of all, yoga, is it only a fitness program? Is it only a wellness program? Or is it only for management of disorders, which is being promoted worldwide today? So I put 6 important silent features of yoga. One is, what is the essence of man? Spirit or soul is the essence of human being. That's why spirituality is the essence of yoga. What is spirituality?
to know what I am, what is the true nature, the search for myself, then all methods and means are take towards you the spiritual practices. And yoga is such a discipline which helps us to understand my gross body, the physical body, the vital body, the psychological body, the intellectual body, and the blissful sheet or the Anandamaya Kosha, so that I can understand myself. This is one. And yoga is also darshana, and yoga is a science, and yoga is an art of healthy living. And yoga is basically a mind-centric practice. If you do practice yoga every day, it doesn't have impact on your mind and emotions, thoughts and emotions. You are doing something else other than yoga, because the yogic practices are purely oriented to orient our thoughts, manage our emotions, and promote well-being, so that I can go to the higher states of our consciousness. This is the preamble. Now come to the second point. So what are the dimensions of well-being? So I have a slides, but it's not appropriate to make the pictorial presentations. But the wellness is always your physical. When physical health comes, we give so many parameters. I make it very simplification. What are the basic instincts of any animal, especially the human being? There are 4 basic instincts: ahara, nidra, bhaya, maithuna. So when it comes to the ahara, the food, it is the food what we eat, the water what we drink, the air what we breathe. These are the 3. So whenever you feel hungry, you eat, it gives happiness. Whenever we become thirsty, you drink water, you feel happy. Same thing, and there is an abstraction of breathing. If you breathe well, it gives happiness. That means these are the instincts. Whenever you don't get good sleep, sleep well, you become happy, fresh. Same thing, once we become adolescent, the desire for maithuna or sexual in appropriate timings are the natural instinct. So that's why we, in our culture and society, we make several provisions for that. The marriage is one of the such of these things. That is also instinct. It is made orderly. Same thing, bhaya. So the fear of losing someone, fear of death, fear of so many things, fear not getting a job. So man continuously living under the fear. These are the basic instinct. You see the wild animals, every animal has the courage, but at the same time they have the fear. They are afraid of one or the other animal or another things. So therefore, whenever we fulfill that, I am happy. This is called physical happiness. It is called physical fulfillment of basic instinct. So therefore, eating well, sleeping well, then managing our sexual desires and overcoming the fear with yogic principles make you physically comfortable, happy, live well. Now, eating well is not sufficient. Again, in the science, if you say inception, digestion, absorption, circulation, excretion, and relaxation. There are the 6 stages. If you eat well, it should be digested well. It should be absorbed well. It should be circulated well. It should be, the waste product should be thrown out periodically. Then each and every organ and system should rest well.
The heart get rest in a fraction of a second. That's why your continuously heart rate is more, that much of efficiency or life period of heart reduces. Same thing the brain, same thing each muscles and organs of the system, human body, need relaxation at appropriate time. It is a set clock. So what system gives you all these things? Eating well, inception, digestion, absorption, etc. Yoga. We have some asanas, forward bending, backward bending. Just I saw some variations of Bhujangasana, Shalavasana, prone postures. So the forward bending, backward bending, lateral bending, twisting, topsy-turvy, relaxation. So in each asana, you are maintaining, you are relaxing the body. You are strengthening the organs. You are making the breathe body coordination with the breathing and connecting the mind, orienting the mind. This is the beauty of a yoga, asanas. Asanas are not pure physical exercises, but you are maintaining for what? So to manage the desire to eat well appropriately, not more, not less. Digest well so that you are having a very sound physical health. This type of proper metabolic activities leads to proper sleep patterns. Proper sleep pattern, etc., regulate our other activities. And when you are not making any mistakes, you are having a less fear in life. A person who is always leading in a right path, he doesn't have fear. So like this, we develop such type of a physical happiness. These are the instincts you have to fulfill. But what is the difference between the man and animals? We are also animal. But we are given discrimination power, buddhi, to choose right or wrong. So we have to use this discrimination power for what? Purushartha, Chaturtha Purushartha. Dharma, Artha, Kama, Moksha. We are not an animal just born and going to die. The ultimate aim of human life is to get moksha, the liberation. Overcome all kinds of suffering. Once man born, no one in this universe say that he don't have any pain. He suffers three kinds of suffering. Adi Bhautika, Adi Daivika, Adhyatmika. Therefore, so for that one, Dharma, Artha, Kama, Moksha. So this one is the thing. What it will give? It will give Shanti, the peace. What is that peace? Peace is mental. The happiness is physical. You eat well, etc., you become happy appropriately. Yoga teaches that. What is that peace? Shanti. It is mentally. So the only one thing, because shortage of time, how we get the Shanti? There are some goals in life. There are some desires in life. There are some targets in life. Every human being has its own his capabilities and capacity. If you set the desires, if you set the goals, if you get the achievement targets according to your own capacity, you achieve that, you internally become happy. I remember my school days. So when I was in the degrees, I used to solve the mathematical problems. There are so many guides. But when I sit and solve one problem on my own, that gives me a lot of peace, self-confidence. Therefore, all the students here, we have to understand your capacities. We have to understand your achievement goals, preparation. Then which will give that? Dhyana will give that. Meditation, what we call in English. Both are different, little bit, but dhyana or meditation gives that capacity to understand my capacity, to set the goal, complete the goal, the peace. Every time you
quantify achieving day to day, you are enhancing the peace within. You become self-confidence. Therefore, dhyana is the core of yoga. You are doing bhujangasana, shalavasana, vakrasana, all these things. For what? Eat well, sleep well, etc. But to make your body to elevate to the higher level, to make your breathing regulated, to orient your thoughts and emotions. Therefore, once you reach that, dhyana take you to the core of yoga. That set your mind, achievable targets. छोटी छोटी बातों में बहुत खुशियाल आते हैं. आप छोटा छोटा आसन परफेक्ट करके देखिए, कितना सुकून मिलता है, कितना अच्छा लगता है. छोटा सा प्रॉब्लम ले लीजिए, इंडिपेंडेंट उनको सॉल्व करके देखिए. कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में कोई भी आपका टास्क दिया जाता है, आप उसको अच्छी ढंग से करके देखिए, कितना आपको शांति मिलती है. ये संतोष अलग शांति है, उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ती है. You get self confidence. Then what are the procedure to get dhyana? मैंने हमेशा बोलता हूं लाइटर वे में, प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है. ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान हो जाता है. सो मतलब है कि ध्यान होने के लिए हमारा क्षमता चाहिए. Therefore, there are 7 steps to do the dhyana. One is cleansing, detoxification. Second one is the diet modification, posture modification, and breathe modification, relaxation, concentration, then meditation. This meditation bring the behavioral changes. Behavioral changes will modify our lifestyle. Once we modify our lifestyle into healthy modified, I can live well, I can live healthy. Most importantly, I can experience the peace. So if you quantify the peace, it converts into eternal peace, which is called bliss. Ultimately, that is the aim of yoga. With these few words, I once again thank the director and the organizers and the faculty members for providing me an opportunity to share some of my views. And thank you very much. I wish the Shivir all the best. Jai Hind, Jai Bharat. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, sir, for enlightening us with those invigorating words. Now I request our expert, Dr. Ramesh Kumar, sir, to share his experience of this Shivir with us. आदरणीय सम्मान के योग्य आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर ईश्वर वैश्वा रेड्डी जी, और ये चीफ गेस्ट ही नहीं है, ये मेरे गुरुजी भी हैं और इनके मार्गदर्शन पे मैं काम करता रहता हूँ. ये मुझे आशीर्वाद देते हैं और मैं इनका आशीर्वाद पा करके अपने आप को धन्य समझता हूँ. मैं इनके चरणों में अपना अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ. आदरणीय सम्मान के योग्य प्रोफेसर बी रमन रेड्डी सर, डायरेक्टर NIT कुरुक्षेत्र, प्रोफेसर अखिलेश स्वरूप सर, प्रोफेसर SM गुप्ता, प्रोफेसर ब्रह्मजीत सिंह, प्रोफेसर दीक्षित गर्ग, प्रोफेसर अश्विनी कुमार, प्रोफेसर GR समन जी, प्रोफेसर दीक्षित जी, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं. आपके पूरी टीम ने और इस जगह पे जितने भी लोग कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं, उन सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं. 3 दिवसीय ये योग शिविर अत्यंत महत्वपूर्ण रहा और विभिन्न छात्रों ने, बच्चों ने, प्रोफेसर्स ने और यहाँ के विभिन्न कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया.
मुझे बहुत अच्छा लगा आपके ये आयोजन, और पूरा स्टाफ जो कोऑपरेटिव रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने योग के बारे में चिंतन मनन किया और अपने साथियों का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उनके अंदर किस प्रकार से शारीरिक बल, आध्यात्मिक बल आए और वो स्वस्थ रहें, इसको लेकर के जो एक शुभ आयोजन इस अमृत महोत्सव के रूप में जो हम 1 वर्ष मना रहे हैं, इसके रूप में आपने इसका आयोजन किया। मैं एक बार पुनः आप सभी गणमान्य व्यक्तियों का, आए हुए योग शिक्षकों का और सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने 3 दिन तक योग की शिक्षा दीक्षा ली है और मैं ऐसा आशा रखता हूं, विश्वास रखता हूं, क्योंकि डायरेक्टर सर का ये विजन था, प्रोफेसर वीवी रमन रेड्डी सर का, कि आप सब लोग इस 3 दिन के बाद जो आप यहाँ सीखेंगे उसका अभ्यास अपने घर पे करेंगे और इस योग की शिक्षा और दीक्षा को अपने जीवन में डालेंगे, ताकि आप स्वयं स्वस्थ रहेंगे, अपने मित्रों को स्वस्थ रखेंगे और अपने परिवार वालों को स्वस्थ रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Dr. Ramesh Kumar sir, for your appreciation and your time that you have given for this Shivir. Now I most kindly request Professor Akhilesh Swarup sir, Director in charge, to say a few words. Hello. Respected Shri Vasav Reddy ji, the eminent yoga expert and the chief guest of today evening. The yoga experts, Shri Ramesh Chandi and his team, esteemed deans of the institute, head of the departments, faculty members, staff members, the registrar, dear research scholars and the students, even the family members of the staff, very good evening. This is a welcome initiative by our director, Professor V.V. Ramana Reddy, which is quite appreciable. It was emphasized that yoga will bring and inculcate the well-being and discipline in our life, which are very essential for our profession as well as the social life. For 3 days, good number of exercises have been exposed here, and hopefully
we'll practice it and make it part of our daily life. I also congratulate on this occasion for a good conduct by our institute's sports action under the leadership of Professor Ashwani Kumar, the two associates, Mr. Sahabuddin and Ms. Pallavi, for arranging these basic things for this Shivir. So I thank all the participants for taking part in this Shivir. Maybe a limited number in a big institute, because we have not many students in the campus, but this is the beginning, and hopefully similar such Shivirs will be conducted in future when more number of students will be in campus. So thank you, all the experts being here with us for 3 days, and the participants, organizers, and all those who are involved. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir, for your inspiring words. Now, as we come to the end of our program, I would request Professor Dikshit Garg sir and Professor Satan sir to kindly facilitate Mr. Harsh Kumar Shukla. I request Professor Brahmajit sir and Professor Ashwani Kumar sir to kindly honor Dr. Ramesh Kumar. I finally request Director in Charge, Professor A. Swaroop sir, Professor S.M. Gupta sir, and Registrar in Charge, Samantre sir, to kindly felicitate Pradyuman Singh Shekhawat sir.
With this, we now come to the end of this 3 days yoga Shivir. Thank you all for coming here and joining us online. We hope that you all will have a healthy and peaceful day ahead. Good night. Thank you.